अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो आज की वीडियो है दैट इज़ अबाउट Xlookup। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन कि वी हैव स्टॉक के नेम, वी हैव करंट स्टॉक प्राइस विच यू गोना फाइंड आउट फ्रॉम आवर एक्सेल फार्मूला। वी हैव कंपनी के नेम, वी हैव स्टॉक नेम, वी हैव स्टॉक प्राइस पर यूनिट, सॉरी स्टॉक प्राइस इन डॉलर्स अमाउंट। सो हेयर व्हाट वी गोना डू इज़, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 1 बाय 1 करके और मैनुअली इसको कर लें रादर देन यूजिंग एक्सेल फार्मूला, बट एज वी ऑल नो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम विद इन नो टाइम कर सकते हैं। इधर हमें क्या करना है कि IFNA एंड इफ एरर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड वी आर यूजिंग हेयर जो फार्मूला आपको पहले बताया, हम वो फंक्शन यूज़ करेंगे to find out our exact value. So as you can see, we will do with the help of formula जो हमें दिया गया है, like given data की मदद से, is equal to, हमने Xlookup की वैल्यू का फंक्शन डालना है इधर। Xlookup bracket, what is the lookup value, we have lookup value and then we need to figure it out कि lookup array किधर है। we have stock के name in the given data जिसकी मदद से हमें फाइंड आउट करनी है our current stock price। हमने सिलेक्ट करना है उस सेल तक जहाँ तक हमें रिजल्ट चाहिए, सो दैट इज सेल 24 and then we have to select stock price। सेम थिंग, जहाँ तक हमें रिजल्ट चाहिए उसको हम वहाँ तक सेल को ड्रैग कर लेंगे। And then comma, inverted commas, stock not available। Here we input our fourth argument। लाइक जहाँ पे अगर हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती तो हमें वहाँ क्या करना है, हम वो कमांड दे रहे हैं अभी यहाँ पे। स्टॉक नॉट फाउंड, inverted commas, and then enter। So we have current stock price $196.32। So we're gonna drag it until the cell we need our result, or सेम थिंग अगेन एंड अगेन इन ऑल वीडियोस, या फिर आप सेल के कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक करें तो फिर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा जहाँ तक फार्मूला जा रहा है।
सो एज यू कैन सी जहाँ पे स्टॉक नहीं मिल रहा वहाँ पे इसने खुद ही बता दिया है, एक्सेल हमें बता रहा है कि स्टॉक नॉट फाउंड, और जहाँ पे स्टॉक है वहाँ पर वी हैव आवर वैल्यूज. So it is pretty simple to figure it out. And the main thing is less function saves the time because time is precious. और आप उस टाइम में अपने लिए कुछ बेहतर सोच सकते हैं to earn more money or to spend it with your family to save your time.